हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आरो के रिएक्शन में। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट्स मीट टू माय सब्सक्राइबर्स और उनके मैसेजेस को, उनकी रिक्वेस्ट को। तो ये आपके सामने है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे सजेशंस आप लोग करते हैं। जैसे शोएब अहमद भाई ने पूरी लिंक डाल दी है वीडियो की और बताया है नुमान अली पे रिएक्ट करिए। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये सब सजेशन सही हैं, इन वीडियोस के साथ हमें आना चाहिए या नहीं। देन वी हैव रेहान साकिब, वी हैव समीर अहमद जिन्होंने अगेन नुमान अली खान की वीडियोस को बोला। तो आई एम श्योर कोई फेमस हस्ती है नुमान अली खान जिनकी वीडियो पे है। एवियान है जिन्होंने लिखा है कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है लेकिन उर्दू काफ़ी है। उसके बाद जिया है, उन्होंने कुरान की तिलावत के लिए लिखा हुआ है। अलग अलग कंट्रीज से हैं, दुबई से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, कनाडा से हैं। और उस्मान भाई हैं, कोहिस्तानी की वीडियोस पे हैं। सादिक भाई हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, बहुत बहुत प्यार बांग्लादेश को भी। तो आप सबका प्यार और आप सबका यही सपोर्ट जो है, चाहे मैं लेट नाइट काम करूं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये जो वीडियोस बनाना, उसके बाद जो आपके कमेंट्स आते हैं जिनसे लगता है कि आप लोग जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है वो काफ़ी अच्छी है। इतना प्यार और इतना सपोर्ट बस यही चाहिए आप लोगों से। और इसी तरह आप लोग एक्सप्लेन करते रहिए, कंटेंट्स करते रहिए। बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे हैं, जैसे इस डब्ड वीडियो के लिए, नॉन मुस्लिम वीडियो के लिए ओरिजिनल वर्जन पे रिएक्ट करने के लिए वोकैबलरी कुछ लोगों को काफ़ी टफ लग रही है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयान के वीडियो में बात हो रही है, बहुत सारी सीरीज़ के बारे में बात हो रही है, कुरान तिलावत को लेके बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है। तो ये काफ़ी कुछ रिलेट है। जैसे ओपिनियन भाई ने लिखा है कि आई लाइक द कॉन्स्टेंट रिव्यू विद patience and because of me he has watched this video. It's a big achievement. Thank you so much. बहुत सारा प्यार आप सभी को, बहुत सारा आप सब खुश रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो सब्सक्राइब करिए के आरो के रिएक्शन को। बस यही सारे कमेंट्स और यही सारे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हमें भी एनकरेज करते हैं कि आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे कंटेंट लाते रहिए। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। दिस वीडियो इज अबाउट कि कुरान ऑलरेडी एक मिरेकल की बुक है, हम सब जानते हैं, बट नाउ उसमें बहुत सारे अनसाइंटिफिक कुरान वर्जन है। हमने इतना तो देखा कि कौन कौन से वर्जन्स में साइंटिफिक सिग्निफिकेंस मौजूद है, मगर अनसाइंटिफिक वर्जन्स ये मैंने पहली बार सुना हुआ है। सो लेट्स वॉच दिस अगेन। दिस इज डब्ड वर्जन नहीं है, ओरिजिनल वर्जन है। बट मैं देखना चाहती हूँ कि टॉप 10 अनसाइंटिफिक कुरान के वर्सेस क्या है। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं। एंड में ऑफ कोर्स आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। Hello everyone, it's time again we talk about the Quran. Last year we examined the book's, let's say, unique perspective on topics like marriage, women's rights, slavery, etc. And the verses we found were quite concerning. However, while that video focused more on the morality of the Quran, this time we'll look at its scientific accuracy, or lack thereof. These are the top 10 unscientific Quran verses. Number 10, where milk comes from. While the part of the body where a cow produces milk may seem like common sense, the Quran somehow got the location wrong. It claims that milk comes from their belly, between excretions and blood. It also describes the milk as pure and palatable to the drinkers. Yes, never mind the fact that raw milk can have bacteria, parasites, and viruses in them, and never mind the people who are lactose intolerant, or the fact that it's very common in people of Arab descent. How ironic. Basically, never go to this book for any info on nutrition. Number 9, how birds fly. Aerodynamics, air pressure, that's stupid. The Quran says birds fly because of Allah. Well, I'm sorry Allah, but for an all-powerful being, I think you could do a bit better. Couldn't God have just made the birds self-sufficient? Why would an all-powerful creator make animals that can't function on their own? It seems like a very unintelligent design. Number 8, how ships float. Since the writers of the Quran couldn't wrap their heads around how birds can fly, it shouldn't be a shock they didn't know how ships float either. In the book, ships float not due to buoyancy, but because of, you guessed it, Allah. Remember everyone, if you don't know how shit works, just say God did it. DNA? God. The Earth? God. Cancer? God. Oh, yeah, I forgot. Nobody likes that one. Number 7, bring back the dead. Before the invention of things like the defib, it seems they had a very different method for reviving people. One part of the Quran tells a story of slaughtering a cow, and then using part of that cow's body to bring a man back to life.
I don't know. Something tells me this doesn't work, but to be sure, let's do an experiment. Allahu Akbar! What the fuck? Number 6. Dead birds can fly. As if the Quran couldn't get any more bizarre, this book has zombie birds in it too. Allah tells Abraham to take 4 birds and cut their bodies into pieces. Scatter their body parts over mountaintops and then call the birds back. They will swiftly come to him. This is some fucked up torture porn. I mean, this scenario is disturbing enough on its own, but can you imagine being the bird in this situation? Maybe Allah just really hates birds. Either way, this is some next level animal cruelty. Vegans, get on this shit. Number 5. The moon emits light. A word of advice to any science majors out there. If you're studying for an exam, this is the last book you want to use. In the Quran, the moon is described as being a light. Not reflected light, but literally a light itself. That just makes no fucking sense. I mean, it's just bullshit. However, this isn't the only thing they say about the moon. Number 4. The moon was split in 2. At the very beginning of chapter 54 in the Quran, it says the moon was amazingly split in 2. Why did this happen? Well, according to the Hadith, the people of Mecca requested that Muhammad show them a miracle. So Muhammad was like, okay, there's the moon split in half. Now, if this event actually occurred, you would think there'd be some scientific evidence supporting it, and you would think there'd be tons of documentation from other cultures recounting this event. But there isn't. Now, some Muslims have tried using this picture of a depression on the moon as evidence the moon was split. However, this is actually one of many grooves found on the moon called a rill. This particular rill is called Rima Ariadaeus, and while the moon has a circumference of over 10,000 kilometers, this rill only has a length of about 300, which makes it less than 3% the circumference of the moon. Yeah, not very strong evidence of a split. Not to mention the fact that planets like Mars and Venus also have rills, so did Allah split them in half too? Even a scientist from NASA has said this is bullshit. Number 3. The sun sets on Earth. Yes, people, despite being roughly 109 times the diameter of Earth, and despite the sun's surface being about 10,000 degrees Fahrenheit, the sun is not only able to land on Earth, but can do so without burning us all alive. To be specific, the Quran says the sun sets in a muddy spring, effectively boiling any life in there. Number 2. The shape of the Earth. Okay, I want you to guess how the Quran describes the Earth. I'll give you a hint. Flat. It's not a sphere or a ball. Give up? Alright. Flat. It's actually described as being like a carpet, spread out. I guess kinda like one of those city play carpets for children. Come to think of it, a lot of things in the Quran sound like the ignorant but vivid ideas of a child. It's almost like the Quran was written a long time ago, by people with little comprehension of how the world works. Huh. Number 1. Where semen comes from. And now, ladies and infidels, according to the Quran, semen comes from between backbone and ribs. Wow, that is impressively wrong. You need to move a little lower. Whether it be cows or human beings, anatomy is clearly not the Quran's strong suit. So hopefully with this video you've learned some new things about the Quran. And hey, even if you're a Muslim, maybe you weren't familiar with a few of these verses. The Quran is said to be the word of Allah, and because Allah is apparently perfect in every way, the Quran is therefore perfect as well. But if that were the case, then there should not be verses in this book which we know are empirically wrong. Seeing how the Quran is so blatantly detached from reality, maybe it's not the word of a god. Maybe it's not really perfect. Maybe, just maybe, it's nothing more than a primitive book from a primitive time. Well, this is really interesting. I mean, मैंने क्योंकि कुरान पढ़ी नहीं है, मैं उसके चैप्टर्स पे डेफिनेटली रिएक्ट कर रही हूँ, बट दिस इन्फॉर्मेशन वाज रियली न्यू टू मी और मैंने ऐसा कुरान का एक्सप्लेनेशन पहले कभी नहीं देखा. आई मीन ये वीडियो मिस आउट की थी मैंने. सो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से कुरान में लिखी हुई है कि क्या बर्ड्स की फ्लाइंग, शिप्स का सेल करना, सूरज का डूबना उस मड में, एंड अबाउट दिस सेमेंस थिंग जो लास्ट में मेंशन किया है, और वो सारे 10 फैक्ट्स क्या एक्चुअली कुरान में गलत डिस्क्राइब किए हुए हैं.
दिस मैन whatever is claiming, is it right or wrong, ये तो आप सब ही मुझे बता सकते हैं, चाहे इस्लाम में चाहे कुरान में कहीं पे भी ये इन्फॉर्मेशन हो, आप मुझे बताइए कि क्या ये सही है, बिकॉज इसका आंसर मेरे पास नहीं होगा। बट क्योंकि मैंने इतने सारे पहले भी वीडियोस देखे हुए हैं एंड कुरान में मुझे देखने को मिली हैं थ्योरीज, कुरान में मुझे साइंटिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने को मिले हैं, और तब देखने को मिले हैं व्हेन मैन वाज नॉट एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ, यानी हमें बिग बैंग थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ये सारी चीज़ें कुरान में बिल्कुल एक्यूरेट देखने को मिली है। बट क्या वाकई ऐसे 10 साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, ये तो इन्होंने फाइंड आउट करा, बट क्या ऐसे और भी फैक्ट्स हमें मिल सकते हैं? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ आप लोग देख सकते हैं। तो डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन वेदर द क्लेम्स मेड ऑन दिस वीडियो इज राइट और रॉन्ग। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा इन फैक्ट्स को जान के, क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया। दिस इज माय फर्स्ट काइंड ऑफ दिस वीडियो जो मैंने इस तरह का देखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी मज़ेदार था। मैं मिलती हूँ आपसे अगली फरमाइश अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करिए एरो के रिएक्शन को और कमेंट करते रहिए अपने अच्छे अच्छे सजेशंस को। बाय बाय।